Namaskar everyone, welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of Indian Express. Before we start, I would say, if you change the way you look at the things you look at change. अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें दोस्तों, तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि. तो चलिए फिर इसी के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. First time compensating poor nations for climate disasters on the table. It is available on page number 1. और ये रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो मेन एजेंडा ऑफ COP27. तो दोस्तों रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 opened with the key aim of ensuring full implementations of the Paris Agreement, and this decision has set a positive tone for the 2-week conference. Our next important headline is 2022 likely to be the 6th warmest year so far. WMO means World Meteorological Organization. It is available on page number 7. और ये related है paper to international organization से. In this article we have to know about World Meteorological Organization and its new assessment. तो दोस्तों according to new assessment, global mean temperature for 2022 are currently estimated to be about 1.15 degrees Celsius higher than pre-industrial times. Our next important headline is when chips are down. It is available on page number 11 और ये related है paper 3 economy section से. In this article we have to know significance of both petroleum and semiconductor chips for the Indian economy, obstacles, challenges and suggestions. तो दोस्तों इन सारे points को बहुत शानदार तरीके से लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल राइट. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज चार्जिंग द पेमेंट्स इकोसिस्टम. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 11 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो फीचर्स ऑफ अ रीसेंट डिस्कशन पेपर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम्स, इश्यूज लिंक टू इट एंड वे अहेड. तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम ओवरव्यू देखें तो द recent discussion paper by Reserve Bank of India on charges in payment system has triggered widespread public debate, especially on the zero charge framework for UPI transactions. Our next important headline is liquidity turns surplus as demand for cash drops post festive season. It is available on page number 13 और ये related है paper 3 economy section से. In this article we have to know what does liquidity in the banking system mean. तो दोस्तों it refers to readily available cash that banks need to meet short-term business and financial needs. Why is it in the news? Because liquidity in the banking system has turned to a surplus in November. Our next important headline is the First Amendment and 1950 SC orders before it. It is available on page number 14 और ये related है paper 2 Constitution से. In this article we have to know First Amendment to the Constitution and constitutional position on free speech and Supreme Court's observations in this context. तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. इसके अलावा इसको हमारी वेबसाइट पे भी बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम ओवरव्यू देखें कि अभी न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट agreed to examine a plea challenging the expansion of restrictions to the fundamental right to the freedom of speech and expression that was made by the First Amendment to the Constitution. तो दोस्तों First Constitutional Amendment Bill sought to make several consequential changes from exempting land reforms from scrutiny to providing protections for backward classes in the Constitution, and it also expanded on the scope of restrictions on the right to free speech. Our next important headline is CPEC as status check. It is available on page number 14 और ये related है paper 2 international relations से. In this article we have to know current status of CPEC and how does it affect India's interest. तो दोस्तों इसको recently हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है. लिंक यू नो की कहाँ मिलेगा, उसके अलावा आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं. Our next and last important headline is New Hope for Malaria Vaccine, the Science, Challenges, Opportunity. It is available on page number 14 और ये related है paper 2 Health section से और paper 3 Science and Technology से. In this article we have to know about malaria, availability of vaccines, recent developments, initiatives taken by India and India's weakness and strength in this context. तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है और इसको हमारी वेबसाइट पे भी कवर किया गया है. लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में राइट. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.